Hello everyone, I'm Monica Singroha from IELTS-9. My channel name is IELTS-9, but here in this video I'm going to do IELTS listening from Cambridge IELTS-14 book. Okay, as you know, IELTS listening is same for both the candidates, academic as well as general training candidates. And in this video, first I will be doing the listening test by listening to the audio clips, and after completing this, I will be explaining you how I used to find my answers from the audio clips. Okay, let's start our video. This is the first page. Like here it is given test 1 and listening part 1. First we will be doing part 1 and okay, let's start it. Okay. Section 1. You will hear a woman reporting a theft to an officer in a police station. First, you have some time to look at questions 1 to 3. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. The woman's name is Louise Taylor. So Taylor has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 3. Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. Okay, thank you. And are you resident in the UK? No, I'm actually Canadian, though my mother was British. And your date of birth? December 14th, 1977. So you're just visiting this country? That's right. I come over most summers on business. I'm an interior designer, and I come over to buy old furniture, antiques, you know? There are some really lovely things around here, but you need to get out to the small towns. I've had a really good trip this year, until this happened. Okay. So you've been here quite a while? Yes, I'm here for 2 months. I go back next week. So, may I ask where you're staying now? Well, at present, I've got a place at Park Apartments. That's on King Street. I was staying at the Riverside Apartments on the same street, but the apartment there was only available for 6 weeks, so I had to find another one. Okay. And the apartment number? 15. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Now, I need to take some details of the theft. So, you said you had some things stolen out of your bag? That's right. And were you actually carrying the bag when the theft took place? Yes, I really can't understand it.
I had my backpack on, and I went into a supermarket to buy a few things, and when I opened it up, my wallet wasn't there. And what did your wallet have in it? Well, fortunately, I don't keep my credit cards in that wallet. I keep them with my passport in an inside compartment in my backpack, but there was quite a bit of cash there, about £250 sterling, I should think. I withdrew £300 from my account yesterday, but I did a bit of shopping, so I must have already spent about £50 of that. Okay. At first I thought, oh, I must have left the wallet back in the apartment. But then I realized my phone had gone as well. It was only a week old, and that's when I realized I'd been robbed. Anyway, at least they didn't take the keys to my rental car. Yes. So you say the theft occurred yesterday? Yes. So that was September the 10th? And do you have any idea at all of where or when the things might possibly have been stolen? Well, at first I couldn't believe it because the bag had been on my back ever since I left the apartment after lunch. It's just a small backpack, but I generally use it when I'm traveling because it seems safer than a handbag. Anyway, I met up with a friend, and we spent a couple of hours in the museum. But I do remember that as we were leaving there, at about 4 o'clock, a group of young boys ran up to us, and they were really crowding round us, and they were asking us what time it was. Then, all of a sudden, they ran off. Can you remember anything about them? The one who did most of the talking was wearing a t-shirt with a picture of something. Let's see. A tiger. Right. Any idea of how old he might have been? Around 12 years old? And can you remember anything else about his appearance? Not much. He was quite thin. Color of hair? I do remember that. He was blonde. All the others were dark-haired. And any details of the others? Not really. They came and went so quickly. Right. So what I'm going to do now is give you a crime reference number so you can contact your insurance company. So this is 10 digits. 87954 82361. Thank you. So, should I contact... That is the end of section 1. You now have... That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 2. Section 2. You will hear a manager giving a welcome talk to a group of apprentices who are starting their training at the company. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning, everyone. My name's Janet Parker, and I'm the Human Resources Manager. We're very happy to welcome you to your new apprenticeship. I hope that the next 6 months will be a positive and enjoyable experience for you. I'd like to start with some general advice about being an apprentice.
Most of you have very little or no experience of working for a big organisation, and the first week or so may be quite challenging. There will be a lot of new information to take in, but don't worry too much about trying to remember everything. The important thing is to check with someone if you're not sure what to do. You'll find your supervisor is very approachable and won't mind explaining things or helping you out. You're here to learn, so make the most of that opportunity. You'll be spending time in different departments during your first week, so make an effort to talk to as many people as possible about their work. You'll make some new friends and find out lots of useful information. As well as having a supervisor, you'll each be assigned a mentor. This person will be someone who's recently completed an apprenticeship, and you'll meet with them on a weekly basis. Their role is to provide help and support throughout your apprenticeship. Of course, this doesn't mean they'll actually do any of your work for you. Instead, they'll be asking you about what goals you've achieved so far, as well as helping you to identify any areas for improvement. You can also discuss your more long-term ambitions with them as well. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. Now, I just want to run through a few company policies for our apprenticeship scheme with you. Most importantly, the internet. As part of your job, you'll be doing some research online, so obviously you'll have unlimited access for that. But please don't use it for personal use. You'll have your own phones for that. Some of you have already asked me about flexible working. After your probationary 3-month period, some of you will be eligible for this, but it will depend on which department you're in and what your personal circumstances are, so please don't assume you'll automatically be permitted to do this. I want to make sure there's no confusion about our holiday policy. Apart from any statutory public holidays, we ask that you don't book any holidays until after your 6-month apprenticeship has finished. Time off should only be taken if you are unwell. Please speak to your supervisor if this is going to be a problem. You'll be expected to work a 40-hour week, but there may be opportunities to do overtime during busy periods. Although you're not required to do this, it can be a valuable experience, so we advise you to take it up if possible. Obviously, we understand that people do have commitments outside work, so don't worry if there are times when you are unavailable. As you know, we don't have a formal dress code here. You may wear casual clothes as long as they are practical. And the only restriction for shoes we have is on high heels for health and safety reasons. Comfortable shoes like trainers are preferable. There's a heavily subsidised canteen on site where you can get hot meals or salads cheaply. Snacks and drinks are also provided, so we've decided to introduce a no-packed lunch policy. This is partly to encourage healthy eating at work, and partly to stop people from eating at their workstation, which is unhygienic. Okay, moving on. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers.
Now turn to section 3. Section 3. You will hear two urban planning students, called Carla and Rob, discussing their presentation on cities built by the sea, following instructions from their tutor. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Okay, so what I'd like you to do now is to talk to your partner about your presentations on urban planning. You should have done most of the reading now, so I'd like you to share your ideas and talk about the structure of your presentation and what you need to do next. Okay, Rob, I'm glad we chose quite a specific topic, cities built next to the sea. It made it much easier to find relevant information. Yeah, and cities are growing so quickly. I mean, we know that more than half the world's population lives in cities now. Yeah, though that's all cities, not just ones on the coast. But most of the biggest cities are actually built by the sea. I'd not realised that before. Nor me. And what's more, a lot of them are built at places where rivers come out into the sea, but apparently this can be a problem. Why? Well, as the city expands, agriculture and industry tend to spread further inland along the rivers, and so agriculture moves even further inland up the river. That's not necessarily a problem, except it means more and more pollutants are discharged into the rivers. So these are brought downstream to the cities? Right. Did you read that article about Miami on the east coast of the USA? No. Well, apparently back in the 1950s, they built channels to drain away the water in case of flooding. Sounds sensible? Yeah, they spent quite a lot of money on them, but what they didn't take into account was global warming. So they built the drainage channels too close to sea level, and now sea levels are rising, they're more or less useless. If there's a lot of rain, the water can't run away. There's nowhere for it to go. The whole design was faulty. So what are the authorities doing about it now? I don't know. I did read that they're aiming to stop disposing of wastewater into the ocean over the next 10 years. But that won't help with flood prevention now, will it? No, really, they just need to find the money for something to replace the drainage channels in order to protect against flooding now. But in the long term, they need to consider the whole ecosystem. Right. Really though, coastal cities can't deal with their problems on their own, can they? I mean, they've got to start acting together at an international level instead of just doing their own thing. Absolutely. The thing is, everyone knows what the problems are, and environmentalists have a pretty good idea of what we should be doing about them, so they should be able to work together to some extent. But it's going to be a long time before countries come to a decision on what principles they're prepared to abide by. Yeah, if they ever do. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. So, I think we've probably got enough for our presentation. It's only 15 minutes. Okay, so I suppose we'll begin with some general historical background about why coastal cities were established.
but we don't want to spend too long on that. The other students will already know a bit about it. It's all to do with communications and so on. Yes. We should mention some geographical factors, things like wetlands and river estuaries and coastal erosion and so on. We could have some maps of different cities with these features marked. On a handout, you mean? Or some slides everyone can see? Yeah, that'd be better. It'd be good to go into past mistakes in a bit more detail. Did you read that case study of the problems there were in New Orleans with flooding a few years ago? Yes, we could use that as the basis for that part of the talk. I don't think the other students will have read it, but they'll remember hearing about the flooding at the time. Okay. So that's probably enough background. So then we'll go on to talk about what action's been taken to deal with the problems of coastal cities. Okay. What else do we need to talk about? Maybe something on future risks, looking more at the long term if populations continue to grow? Yeah, we'll need to do a bit of work there. I haven't got much information, have you? No, we'll need to look at some websites. Shouldn't take too long. Okay. And I think we should end by talking about international implications. Maybe we could ask people in the audience. We've got people from quite a lot of different places. That'd be interesting, if we have time, yes. So now... That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 4. You will hear part of a lecture on renewable energy that uses the power of the sea. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Producing enough energy to meet our needs has become a serious problem. Demand is rising rapidly because of the world's increasing population and expanding industry. Burning fossil fuels like gas, coal, and oil seriously damages the environment, and they'll eventually run out. For a number of years now, scientists have been working out how we can derive energy from renewable sources, such as the sun and wind, without causing pollution. Today, I'll outline marine renewable energy, also called ocean energy, which harnesses the movement of the oceans. Marine renewable energy can be divided into 3 main categories: wave energy, tidal energy, and ocean thermal energy conversion. And I'll say a few words about each one. First, wave energy. Numerous devices have been invented to harvest wave energy, with names such as Wave Dragon, the Penguin, and Mighty Whale. And research is going on to try and come up with a really efficient method.
This form of energy has plenty of potential as the source is constant and there's no danger of waves coming to a standstill. Electricity can be generated using onshore systems, using a reservoir, or offshore systems. But the problem with ocean waves is that they're erratic, with the wind making them travel in every direction. This adds to the difficulty of creating efficient technology. Ideally, all the waves would travel smoothly and regularly along the same straight line. Another drawback is that sand and other sediment on the ocean floor might be stopped from flowing normally, which can lead to environmental problems. The second category of marine energy that I'll mention is tidal energy. One major advantage of using the tide rather than waves as a source of energy is that it's predictable. We know the exact times of high and low tides for years to come. For tidal energy to be effective, the difference between high and low tides needs to be at least 5 meters. And this occurs naturally in only about 40 places on Earth. But the right conditions can be created by constructing a tidal lagoon, an area of seawater separated from the sea. One current plan is to create a tidal lagoon on the coast of Wales. This will be an area of water within a bay at Swansea, sheltered by a U-shaped breakwater or dam built out from the coast. The breakwater will contain 16 hydro turbines, and as the tide rises, water rushes through the breakwater, activating the turbines, which turn a generator to produce electricity. Then, for 3 hours as the tide goes out, the water is held back within the breakwater, increasing the difference in water level until it's several meters higher within the lagoon than in the open sea. Then, in order to release the stored water, gates in the breakwater are opened. It pours powerfully out of the lagoon, driving the turbines in the breakwater in the opposite direction and again generating thousands of megawatts of electricity. As there are 2 high tides a day, this lagoon scheme would generate electricity 4 times a day, every day, for a total of around 14 hours in every 24, and enough electricity for over 150,000 homes. This system has quite a lot in its favour. Unlike solar and wind energy, it doesn't depend on the weather. The turbines are operated without the need for fuel, so it doesn't create any greenhouse gas emissions, and very little maintenance is needed. It's estimated that electricity generated in this way will be relatively cheap, and that manufacturing the components would create more than 2,000 jobs, a big boost to the local economy. On the other hand, there are fears that lagoons might harm both fish and birds, for example by disturbing migration patterns and causing a buildup of silt, affecting local ecosystems. There are other forms of tidal energy, but I'll go on to the third. Now the answers for test 1. ओके अब लेट्स डिस्कस इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है. ओके लेट्स फाइंड इट. ओके जब वो बोलता है यू विल हैव सम टाइम टू लुक एट द क्वेश्चंस, फटाफट इम्पॉर्टेंट जो भी आपको कीवर्ड्स नज़र आते हैं कि हाँ इस ये पक्का बोलेगा, और लाइक आपको जो भी है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, हल्का हल्का अंडरलाइन करके.
एंड जैसे ही वो स्पीकिंग स्टार्ट होती है, ऑडियो क्लिप स्टार्ट हो जाता है, तो व्हाट यू कैन डू कि आप अपने जैसे सपोज उसने नेम बोल दिया, उसको यहाँ पे टिक करते रहो, ये बोला, फिर वो ऐसे बोलेगा। नेशनलिटी, ऑफ कोर्स उसने नेशनलिटी की बजाय उसने रेजिडेंट, सिटीजन कुछ ऐसे बोला था। उसने बोला था कि रेजिडेंट, आर यू द रेजिडेंट इन द यूके, उसने ऐसे बोला था। तो उसने नेशनलिटी, रेजिडेंट एंड नेशनलिटी सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो उसने कैनेडियन बोला। तो ये चीज़ अब थोड़ा सा यू शुड कीप इन माइंड वाइल लिसनिंग टू द ऑडियो क्लिप्स, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट साइड बाय साइड। वो स्पेशली सेक्शन 1 में तो वो ऐसे चलेगा लाइन वाइज, ओके हाँ, बट बीच में वो कुछ दूसरी बातें भी बोलता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट आप अपने वर्ड्स पे, अपने लाइन पे कि हाँ अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है, बीच में जो ये हैं इनको भी थोड़ा देखते रहिए कि इनके बारे में बात हो गई। जैसे ये 2 मंथ्स की बात हो गई, उसके बाद डेफिनेटली वो करंट एड्रेस के बारे में ही आएगा। ओके, डिटेल्स ऑफ थेफ्ट में मैंने इसको सर्कल क्यों किया है, बिकॉज आइटम्स स्टोलन, आइटम्स लिखा हुआ है, मीन्स कि 2 कोई आइटम्स हैं, 2 कोई चीज़ें हैं जो उसकी गुम हुई हैं। सो इसलिए एक तो उसने वॉलेट बताया है, दूसरा उसने फ़ोन के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे जब एक उसने बोला स्टर्लिंग, 250 स्टर्लिंग, ऑफ कोर्स ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, हमें 250 ही लिखना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है ओके पॉसिबल टाइम एंड प्लेस ऑफ थेफ्ट। ओके, इसके बारे में उसने क्या बोला है, जस्ट अ मिनट, यस ओके। तो लोकेशन, ऑफ कोर्स किसी लोकेशन, किसी चीज़ के बारे में, चीज़ है मीन्स कोई प्लेस के बारे में डिस्कशन आना था आंसर पहले ही। अगर हमारे पास टाइम है तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्लेस का नाम ही आएगा। उसके बाद उसने आस्क्ड फॉर द रैन ऑफ, ओके ये दिस इज़ सिंपल। ओके, साथ में उसने टी शर्ट भी बोला, पिक्चर भी बोला, टाइगर भी बोला, सब कुछ उसने सेम टू सेम बोला था। उसने इसके लिए स्लिम बिल्ड के लिए उसने थिन यूज़ किया था। ओके, सो आपको साइड बाय साइड यू शुड जस्ट आपको अपना फोकस उस पर देना चाहिए कि वो सिनोनिम वर्ड्स यूज़ कर रहा है। अगर आपने थिन नहीं ध्यान से सुना, स्लिम बिल्ड का अगर आपको मीनिंग समझ नहीं आया तो आप मिस कर जाओगे फिर। और ऑफ कोर्स उसने हेयर भी बोला था, यस, तो हेयर उसने ब्लॉन्ड बोला था। तो यहाँ पे आप अपनी ब्लॉन्ड की एक तो BLOND, ठीक है, ये भी लिख सकते हो और ये भी, इन दोनों स्पेलिंग आपकी करेक्ट होंगी। ये नहीं कि आपको ये लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यही होगा, नो, ऑफ कोर्स आप ये भी लिख सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द पार्ट 2। यस, हेयर ये MCQ था, हमने देख लिया था, इंस्ट्रक्शन था चूज 2 लेटर। अब नाउ वी हैव बीन गिवन 5 ऑप्शंस, तो हमने इसमें से वी हैव टू चूज ओनली 2 लेटर्स, 2 लेटर्स ABCD। इनमें से आप वहाँ पे अगर A और C लिखोगे तो भी करेक्ट है। इफ़ यू राइट देयर C और B देन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, बोथ वेज कैसे भी लिख के आना आप, 11 और 12 क्वेश्चंस के लिए बोथ वेज करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे देखो उसने फिर क्या बोला था कि न्यू चैलेंजेस होंगे, इंजॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला था, इसलिए मैंने इसको कट किया। ओके, ये इसके बारे में उसने कोई बात नहीं की। एंड इसके बारे में स्पेशली जो और स्पीकर थी उसने बोला था कि जो भी कुछ है सुपरवाइजर से आप पूछते रहिए व्हाट टू डू मीन्स आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। एंड हेयर, यस, ये मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें लिखा था कि वो कुछ कोलीग्स है तो पीपल या फ्रेंड्स इन ऑफिस और एम्प्लॉयज़ ऐसे कोई बात करेगा, तो ऑफ कोर्स उसने फिर यही बात की थी, पीपल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो फिर ये कोलीग्स हो गया। ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट में कोलीग्स ही होते हैं। सो ओके, नेक्स्ट हेयर, नेक्स्ट 2 थिंग्स 13 to 14 वाले में हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे उसने बात की थी कि वीकली टाइम टेबल पे वो आपको वीकली आपको वो जो मेंटोर्स हैं वो आपको मिलेंगे। बट उसने फिर ये बोला कि नो, आप उनसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है यू कैन डिस्कस योर प्रोग्रेस के लिए उसने क्या बोला था मैं बताती हूँ अभी आप। प्रोग्रेस के लिए उसने बोला था आइडेंटिफाई एनी एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। प्रोग्रेस हेयर मीन्स इम्प्रूवमेंट। सो स्पीकर हैज़ यूज्ड द वर्ड synonym for progress, improvement. He used the word improvement instead of progress. So you have to keep listening to synonyms also.
keep your eyes as well as ears open for the synonyms and all. Okay, for in the last book उसने क्या बोला कि future plans आप discuss कर सकते हो, making career plans, long term plans, yes long term plans उसने बोला था. तो इससे मुझे अपना आइडिया लगा कि yes ये आंसर है. Okay, let's go to the next question. Okay, yes. अब 15 to 20 क्वेश्चंस में उसने कैसे क्या पूछा था, उसने ये क्वेश्चन पढ़ना लाइक बिफोर स्टार्टिंग लाइक दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. जब वो बोलता है आपके पास टाइम है तब आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि वो कह क्या रहा है. यस, व्हाट डज द मैनेजर से अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी पॉलिसी फॉर अप्रेंटिसेस. कंपनी की पॉलिसी इन चीज़ों के लिए, कंपनी पॉलिसी फॉर अप्रेंटिसेस क्या है, आपको सेलेक्ट करना है A B C. इट इज़ एनकरेज, येस यू कैन डू इट, और ज़्यादा कर सकते हो. सम रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस में मोस्टली वर्ड यूज़ होता है डोंट डू, कि डोंट डू दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, वो रिस्ट्रिक्शंस में आ जाता है. एंड रूल्स तो है कि कंपनी की कोई पॉलिसी है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए. रूल्स, रेगुलेशंस, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स वो यूज़ करते हैं. लाइक इन फर्स्ट मैं बताऊँ आपको, फर्स्ट और सेकेंड में भी अपना क्यों आया है, बिकॉज उसने कहा था डोंट डू इट, डोंट यूज़ इंटरनेट फॉर योर पर्सनल पर्पजेज एंड यू हैव योर ओन फोन्स. आप उसके लिए आप अपना इंटरनेट यूज़ करोगे पर्सनल रीजंस के लिए. तो इसलिए हमने ये, ऑफ कोर्स इंटरनेट उनके पास था बट उसने कहा कि पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये बी लगाया. देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस है, पूरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है बट हाँ पर्सनल यूसेज के लिए उसने, स्पीकर ने बोला था कि रिस्ट्रिक्शंस है. सेम इन फ्लेक्सिबल वर्किंग के लिए भी कि 3 मंथ्स तक आपको ऐसे काम करना है, उसके बाद आप दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकती हो. बट उसने बोला था कि वो भी, उसके लिए भी फिर उसने बात बोली थी कि बट इट विल डिपेंड ऑन विच डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आप हो डिपेंड करता है कि उसके लिए फिर वही मीन्स रिस्ट्रिक्शंस हैं. ऐसे ही बुकिंग हॉलीडेज, ऑफ कोर्स आप अप्रेंटाइज हो, अप्रेंटाइज ट्रेनी हो तो आपको वो जब तक आपकी ट्रेनिंग फिनिश नहीं होती तब तक आप हॉलीडे कोई बुकिंग नहीं हो सकती है. तो मीन्स ये एक रूल है वहाँ का. सो ऐसे इन दिस वे मैंने ये लगाया. आप जब भी वहाँ पे ऐसा ये ऐसे वाला टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंपनी, ये जो ऊपर जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा जस्ट केयरफुली इसको पढ़ना है, तब आप इसको आंसर लगा सकते हो. ऑफ कोर्स केयरफुली आपको सुनना भी है, लिसनिंग भी अच्छे से करनी है. लेट्स गो टू द पार्ट 3. मैं बताती हूँ पार्ट 3 में लाइक क्या हुआ था. लाइक दिस इज़ ऑल्सो एन MCQ पार्ट 3. एंड यहाँ पे कार्ला एंड रॉब दे आर टॉकिंग अबाउट सम कोस्टल सिटीज़. ठीक है, तो यहाँ पे उसने फर्स्ट उसने ये ऑप्शन दिया, फिर उसके बाद कहा बट लार्जेस्ट बिग सिटीज़ के बारे में, वर्ल्ड्स बिग सिटीज़ के बारे में बात की थी. तो उसने फिर यह किया था उसके बाद, तो फिर इसलिए मैंने ये बट के लिए लगाया. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी ऐसे वाले MCQs में बट, हाउएवर, बिकॉज, या, नो, ऐसे कुछ डिफरेंट मतलब वो एटिकेट्स वाली कोई बात आती है, मतलब डिफरेंट ऐसे वाले वर्ड्स आते हैं ना, तो उसको समझो कि आपका आंसर फर्स्ट वाले ऑप्शन से चेंज हो गया. ठीक है, 22nd में था, उसने एग्रीकल्चर की भी बात की, इंडस्ट्री की भी बात की, फिर उसने लास्ट में ये बोला कि इसकी वजह से रिवर में पोल्यूशन आएगा और मे ब्रिंग पोल्यूशन टू द सिटी. मेन फिर उसके लिए बात की थी. ओके, मैं बताती हूँ आपको. उसने बोला था इट मीन्स मोर एंड मोर. लास्ट में उसने क्या बोला, एक्सेप्ट. यस, ही यूज द वर्ड एक्सेप्ट. ये दोनों चीज़ें बोल के उसने कहा, ओके स्टार्ट करती हूँ मैं. वेल एज द सिटी एक्सपैंड्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स उसने दोनों नाम लिए. ठीक है, टेंड टू स्प्रेड फर्दर इनलैंड अलोंग द रिवर्स, रिवर की भी बात हो गई. एंड सो एग्रीकल्चर मूव्स इवन फर्दर इनलैंड अप द रिवर. डेट्स नॉट नेसेसरीली ए प्रॉब्लम. यस, उसने क्या बोला, डेट्स नॉट नेसेसरीली ए प्रॉब्लम बट except it means more and more pollution to the cities are discharged into the river. उसने ये बात बोली थी, मीन्स कि एक्सेप्ट करके फिर उसने ये सब आंसर को कैंसिल कर दिया एंड इस पे फिर उसने फोकस किया कि पोल्यूशन पे होगा. एंड 23rd वाले में क्या था, उसने बात की थी ओके ग्लोबल वार्मिंग. यस, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की उसने बात की. फिर उसने कहा ग्लोबल वार्मिंग, उसने इसको दूसरा वर्ड यूज़ किया, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज
ग्लोबल वार्मिंग की उसने इनडायरेक्ट वे में बात की। मीन्स तो सेम ही बन रहा था ना, इसीलिए इसको मैंने सेलेक्ट किया। ओके यस, हेयर 24th में उसने कहा कि मनी फॉर ए न्यू फ्लड प्रिवेंशन सिस्टम। यहाँ पे लिखा है हेयर इट इज़ गिवन पे फॉर ए न्यू फ्लड प्रिवेंशन सिस्टम। ये सब उसने बात की, लेकिन फिर उसने सब कुछ कैंसिल किया और लास्ट में क्या उसने बोला, उसने इन दोनों के बारे में बात की, फिर उसने बाद में बोला नो रियली they just need to find the money for something to replace the drainage system। और उसके बाद फिर ये फ्लड प्रिवेंशन सिस्टम को मतलब उसने फिर फोकस किया, इसलिए मैंने इसको लगाया। ओके लेट्स गो टू द पार्ट 4। पार्ट 4 में ओके इसने यहाँ इंट्रोडक्शन जो है, ये इंट्रोडक्शन वाली जो लाइन है, अगर इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट डैट, उसने इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको बोलने से पहले ही उसने इंट्रोडक्शन में इसका आंसर दिया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। अगर आप सोच रहे हो कि पहले ये बोल देगा फिर आपका ये बोलेगा इंट्रोडक्शन, नो, उसने इंट्रोडक्शन में ये लाइन बोल दी, फिर उसने इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया कि ये एनर्जी एंड ओशन एनर्जी, फिर उसने बताया व्हाट्स नीडेड, वी नीड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मेथड्स। अब आपने देखा होगा जब मैं इस लिसनिंग को कर रही थी तो मैं साथ साथ में टिक कर रही थी कि यहाँ पे पहुँच गए हम। इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन पेपर पे ही रहता है, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर क्वेश्चन पेपर। अगर आप ऐसे बैठे हो, पेंसिल आप फिंगर भी लगा रहे हो, सपोज फिंगर से क्या होगा, आप ऐसे फिंगर घुमा रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, बट ऑफ कोर्स आप पेंसिल से टिक कर रहे हो, मतलब आपका माइंड यहीं चल रहा है, आपका माइंड इधर उधर कहीं पर भटका नहीं है। ऑफ कोर्स आपको साथ साथ में यूँ ऐसे ऐसे करते जाना है कि हाँ ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया। ऑफ कोर्स अगर आपको लग रहा है कि ये सब बोल के आगे चलेगा, नहीं, इनमें से कोई ना कोई वर्ड तो डेफिनेटली, लाइक अगर हमने यहाँ तक हो गया है, सपोज हमने ये 32 हो गया है, तो उसके बाद अब वो बोला ही नहीं, वो ऑन शोर नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, अगर आपको ऐसा लग रहा है, बट वेट करो, इस लाइन में से पक्का ही इज़ गोइंग टू से एनीथिंग, या उसने पहले ये बोला, फिर उसने ये बोला, फिर उसने 3rd नंबर पे ऑफ शोर बोला, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ वो इनमें से पक्का बोलेगा वर्ड, नॉट एवरी वर्ड यहाँ पे कुछ वो सिनोनिम नहीं डालेगा, ऑफ कोर्स वो फिल इन द ब्लैंक्स के आसपास ही बोलेगा। सपोज यस, वेव्स कैन मूव, 33 में देखो, जैसे उसने बोला वेव्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, ओके, उस स्पीकर ने क्या बोला, यहाँ तो लिखा मूव इन एनी डायरेक्शन, वहाँ बोला वेव्स कैन ट्रेवल इन एवरी डायरेक्शन। ऑफ कोर्स एनी मीन्स वेव्स हैं तो वो ऐसे घूमेंगी, तो इन एवरी डायरेक्शन भी यही हो गया और इन एनी डायरेक्शन भी यही हो गया। तो यहाँ पे उसने मूव की जगह लिखा, बोला ट्रेवल, और यहाँ एवरी डाल दिया उसने। ओके, ऐसे ही यहाँ पे उसने बोला था, अब यहाँ सैंड आ गया, मूवमेंट ऑफ सैंड के बारे में बात की, तो फिर उसने इसके बाद बोला ओशन फ्लोर। ऑफ कोर्स उसने ओशन लिख दिया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट, फ्लोर हमने लिखना है, तो मैंने इसलिए फ्लोर लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे वेल्स किसी प्लेस का नाम है, ये भी सी किसी प्लेस का नाम है, मेरे को वेल से हो गया, हाँ जब ये वेल्स की बात होगी तो मीन्स वो यहीं कहीं है। उसने लगून की भी बात की थी, नो डाउट। उसके बाद बात करते हैं फिर हम, ये सारे टर्न वाइज ही स्पोक, स्पीकर ने जो ये सब उसने बातें की थी। ओके, लास्ट ओके बताती हूँ, यस 38th वाला देखो, जैसे 38th वाले में उसने क्या बोला कि 38th में बोला उसने the turbines are operated without the need of fuel, no fuel is required। उसने पूरे सेंटेंस को ही पैराफ्रेज किया, नो, without the need of fuel, without the need of fuel उसने ये बोला, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ फ्यूल लगाया। ओके, यहाँ है लाइकली टू क्रिएट ए नंबर ऑफ, उसने बोला 2000 जॉब्स, स्पीकर हैड स्पोकन लाइक हेयर 2000 जॉब्स, तो मैंने 2000 को हटाया और जॉब्स लिखा, बिकॉज हमें क्या लिखना है, हमें वी हैव टू राइट ओनली वन वर्ड, इसीलिए 2000 को मैंने एलिमिनेट कर दिया एंड जॉब्स लिखा फिर मैंने। ओके, लास्ट में फिर उसने हार्म भी बोला, फिश भी बोला, बर्ड्स भी बोला, एंड बाय इफेक्टिंग, ऑफ कोर्स यस, इसके लिए उसने बोला बाय डिस्टर्बिंग माइग्रेशन पैटर्न। ऑफ कोर्स बाय अफेक्टिंग भी वही होता है, डिस्टर्बिंग होता है, एंड माइग्रेशन पैटर्न तो हमने सीधा लिख दिया बाय अफेक्टिंग माइग्रेशन। अब पैटर्न हमें नहीं लिखना है बिकॉज वी हैव टू राइट ओनली वन वर्ड। इन दिस वे वी हैव completed this test 1 from IELTS 14. Thanks.